Hello students, good morning to all. Today I am going to explain chapter number 3. Chapter name is Human Reproduction. In previous videos I have explained the chapter number 1 and chapter number 2. I hope so you have understood well and pay attention on this chapter also. Now, firstly, I introduce the content of chapter number 3. Student, in this chapter, we cover up many topics. First topic here, human reproductive system. In this topic, we will talk about the what is human reproductive system and its type. Student, second topic, male reproductive system we will study, and third topic, female reproductive system. In both topic we will describe the structure of the male and female reproductive system. Now after that we will talk about the gametogenesis, spermatogenesis, oogenesis. It means that gametogenesis in human, how takes place and what happened during the gametogenesis. We will explain in this topic. Now after that, menstrual cycle क्या होती है ये इस पे हम डिस्कशन करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ ओवा का स्ट्रक्चर कैसा होता है वी विल एक्सप्लेन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, फर्टिलाइजेशन. इन ह्यूमन बीइंग फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. सो हाउ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस वी विल एक्सप्लेन दिस. नेक्स्ट टॉपिक, चेंजेस फ्रॉम एग टू एम्ब्रियो. एग से एम्ब्रियो कैसे बन जाता है वी विल डिस्क्राइब दिस. नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो एंड पार्टूरेशन. एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे स्टेप बाय स्टेप होता है वी विल एक्सप्लेन. पार्टूरेशन या बर्थ, बच्चे का जन्म कैसे होता है, बच्चा जन्म लेता है उस प्रोसेस क्या कहते हैं वी विल डिस्क्राइब दिस. एंड लास्ट टॉपिक, लैक्टेशन. लैक्टेशन क्या होता है. देन दीज टॉपिक्स वी विल एक्सप्लेन and you have to listen, watch all the lectures and make notes properly and draw all the diagrams which given by me. Now first topic I will describe here what is human reproductive system. Student, an organ system which help in reproduction in human being is called human reproductive system. Student, एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम बॉडी का जिसमें या जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, that is called the human reproductive system. Students, now next question here I am asking to you, what are the types of the human reproductive system? Student, human reproductive system is of two types on the basis of function and structure. First is male reproductive system. This reproductive system present in male human, and second is female reproductive system. It is present in female human.